हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माई स्टडी। इज माई स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इन द प्रीवियस क्लास we have already given the formulas of integrations, the integration by substitution methods, integrations for trigonometric identities, etc etc। वो सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है क्लास 12th मैथ सीबीएसई बोर्ड में। तो वो सारे वीडियोस देखिए, रिवाइज कीजिए, कोई डाउट्स आता है तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस और एडवांस या नीट एग्जामिनेशन की, या सीबीएसई बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि इसकी तैयारी होती है कि नहीं होती है। आप सिर्फ कमेंट करिए, सारा क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। हेडिंग कर रखा है ऑलरेडी, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस वाई, इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो देखिए, नाम क्या है, इसमें फ्रैक्शंस है, तो ऑफ कोर्स कई फ्रैक्शन से रिलेटेड चीजें होंगी। और यहाँ पर जो फ्रैक्शन से रिलेटेड फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं रैशनल फंक्शंस। आप में से बहुत सारे लोगों ने रैशनल फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी नाम सुना होगा प्रीवियस क्लास में। सो हियर देयर इज अ टर्म दैट इज द रैशनल फंक्शन। So rational functions has the form px by qx, but the important point with this is that if you write the px by qx, it is a rational functions, and this px is in polynomial form. This px is in polynomial form. This qx is also in polynomial form. So a polynomial has a degree, a particular degree, which is the highest power of the variables. So here, if the degree of the px, if degree of px is less than degree of qx, then it becomes or it is called as proper fraction, proper rational functions। जैसे आपने फ्रैक्शंस में क्लास 5th स्टैंडर्ड लेवल में पढ़ा होगा कि इफ आई राइट px by qx and for example 1/2 is a fraction, one is numerator is lesser than the denominator, it is a proper fraction. But sometimes the fraction is also like that, 3/2. Here numerator is more, so this is not the proper fraction. In the same way, when I talk about the rational function, which is a polynomial in px or qx, if degree of px less than degree of qx, then it becomes proper rational functions. क्योंकि like that, if you want to take the example of this, if I write x plus 1 divided by x square plus x plus 2, we see that the degree of numerator, the degree of d of numerator is equal to 1 and degree of denominator is equal to 2. So here degree of denominator is more than the degree of numerator, जो numerator में है, top में है, ऊपर में है, their degree is less, then it become the proper function. So in this class we will learn that for such type of function how to integrate that.
if it is proper functions. So there are different forms that I'm going to discuss one by one. There are total 6 or 7 we'll discuss here in this class. So for proper fraction also, I'm going to give you some methods. A simple trick is there. That trick you have to discuss. So these are some tricks that I will discuss. If it is a proper fraction, how to solve that? Very simple fraction, very simple. It is very simple. We'll definitely able to solve it. First, try to understand these things. Now, it is not always necessary that denominator of, take the example second. If the degree of, in the previous case you have seen that the degree of px is less than degree of, but if degree of px is more than degree of qx, which also means that if the degree of numerator is greater than degree of denominator, then it becomes improper fraction. It is called as improper fraction. So for improper fraction also there is one method. What is that? First take an example. X cube plus x square plus x plus 1 divided by x plus 1. So what I see it here, the degree of numerator is 3, degree of numerator is 1. Now, if I want to solve this, if this function, this kind of function comes where the degree of numerator is more than degree of denominator, to integrate that functions, we have to convert into a special form. Okay, so there is one method for improper fraction. There is one kind of trick for proper rational functions also. So this is fraction you can say, but it generally will say that function. It is not fraction. I will say that improper rational functions. Improper rational functions. So what I see it here, to solve the improper function, to solve the proper fraction. You do have, all of you have understood this, what is proper function, what is improper fraction. Now, if the question comes, then how to solve that? So take the method now. Now, there is one more thing that some student ask the question is that, sir, if the degree of numerator is equal to degree of denominator, then what happens? So if degree of px is equal to degree of qx, then what would happen? So if degree of px is equal to degree of qx, this is also called as improper fraction. So for such case also there is one method. So it also comes improper fractions here, improper rational functions or improper rational function. Fine. So this way we can solve that. If the improper rational functions are there, improper functions are there, so both would have the same methods, either the same degree or the greater degree of the numerator with respect to denominator. Now take the method one by one that I'm going to discuss here, and you have to use that methods. Total 5 methods I am going to discuss. I will do some examples also. अगर मान लीजिए कि हमारा जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में है तो कैसा होगा? हमें इंटीग्रेट करना है px प्लस क्यू न्यूमरेटर में आता है और डिनोमिनेटर में जो आता है वो है x माइनस ए और x माइनस बी. सो फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहां पर a नॉट इक्वल टू b, ये दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग है, जैसे x माइनस 2 x माइनस 3, तो a और b दोनों अलग है, 2 और 3 है अलग अलग है. तो अगर ऐसा फंक्शन होगा तो जो ये आपको पहले बता रखा हूं जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो तो इंटीग्रेशन का साइन है. ये जो फंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? एनीबडी कैन टेल? दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेंड. हम इसको इंटीग्रेंड कहते हैं. नाउ दिस इंटीग्रेंड कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म दैट आई एम गोइंग टू राइट a upon a is any arbitrary constant upon पहला फैक्टर x minus a, this is फैक्टर, प्लस b upon x minus b. यहां पर क्वेश्चन उठता है कि सर इफ इट इज क्वाड्रेटिक देन यू हैव टू टेक द फैक्टर. लाइक दैट, इफ यू आर एबल टू टेक द फैक्टर, नॉट ऑलवेज यू विल गेट द फैक्टर.
So if you are able to get the factor, then you can write in this fact. If you are not able to get the factor, there is another method, right? So that I will discuss later. तो अगर फैक्टर अलग अलग है तब तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बाई एक्स माइनस ए बी प्लस एक्स, बस इंटीग्रेंट को लिखना है, इस दोनों को इक्वल करना है, कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू निकालना है। मतलब अब हमें जो इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये दोनों पे लग जाएगा, ये इस पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। दैट आई विल शो यू लेटर। पहले ये मेथड देख लीजिए कि इस केस, कौन से केस में हम क्या करेंगे। दूसरा है हमारा, अगर इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, अगर इस तरह का केस आएगा। यहाँ व्हाट इज द इंटीग्रेंट है, इंटीग्रेंट हमारा है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जहां पर ये होल स्क्वायर आता है, इस केस में हम डालेंगे ए अपॉन पहला इसका एक लीनियर टर्म प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो सिंपली यू हैव टू टेक दैट इन विच फॉर्म इट इज देयर। थर्ड, ये 5 फॉर्म के मिक्स करके भी आ सकता है, वैसे प्रॉब्लम भी बताऊंगा आगे। थर्ड, लेकिन ये 5 एब्सोल्यूट फॉर्म है जिसको आपको देखना पड़ेगा। अगर ऊपर में हमारा मान लीजिए क्वाड्रेटिक आ जाता है, ये मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेंट की, तो हम इंटीग्रेंट की बात करेंगे। इंटीग्रेशन का सिंबल आप लगा सकते हैं दोनों तरफ, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई, नीचे में हमारा 3 अलग अलग है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। यहां पर ए बी सी अलग अलग है, छोटू वाला ए बी सी। वाई रीजन इज दैट इफ इट इज suppose a is equal to b, then it will become x minus a whole square. So that method will be different, right? So that I will tell you later. But here all 3 are different. Then what to do? Again we see that the degree of numerator क्या है इसमें, इसका डिग्री क्या है 2 है, इसका डिग्री क्या है 3 है न्यूमरेटर का। So this is kind of what? Proper fraction, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री कम है। Now if you see that in this case again this is the proper, कौन सा फ्रैक्शन है ये, कौन सा फंक्शन है, प्रोपर है या इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन है, ये भी प्रोपर कैटेगरी में आता है और ये वाला भी प्रोपर कैटेगरी में है। सो इफ द फंक्शन इज प्रोपर रेशनल फ्रैक्शन, जस्ट यू हैव टू write the integrand in this form and then you have to integrate. So we are learning at this time only the proper rational fraction. We are talking about the proper rational fraction. Understood? Now next, px square plus qx plus r. Here what you see there, the degree is 2 and degree is 3. So the numerator and denominator both have different degree and numerator has less degree. It is again the proper fraction. So if the proper fraction जैसा है, जिसको हम proper rational function बोलेंगे क्योंकि ये function है, तो या proper fraction बोलो या rational function है, proper rational function बोलो। Understood? Now if it is proper, then what is the method? You know, a upon पहला factor, just you have to write in this form, b upon x minus b plus, मतलब हमें अब इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो पहले हम इक्वल करेंगे, इसको वैल्यू निकालेंगे, मतलब हम इस ये जो इंटीग्रेंट है ये पूरा का पूरा इसको लिख रहे हैं ऐसा, c upon x minus c, like that. We have to find equating a b c and then we'll integrate it individually. This integration, this like that. Both will be same, the function will be same, there will be no different case here. Now what is the fourth here? px square plus qx plus r, मान लीजिए ऐसा है हमारा इंटीग्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेंड, एंड देयर इज वन स्क्वायर टर्म x minus a square and then there is one linear term. So what do you see it here? Again it is improper or proper? It is proper because degree of numerator is 2, degree of denominator is 3. तो यहाँ 2 है, ये 3 है, अगेन इट इज proper होगा तो फिर क्या करेंगे, a अपॉन पहला के लिए, पहला ये क्या है स्क्वायर है, तो इसमें हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? जैसे इसे पहले बताया था मैंने कि अगर एक x माइनस ए स्क्वायर है और दूसरा x माइनस ए का स्क्वायर होगा तो एक x माइनस ए और दूसरा x माइनस ए का स्क्वायर होगा। So here again x minus a का whole square. First I will take the linear 1 power, then second power, and third is the third factor, which is x minus b. So now I have to equate this integrand to this, both are same. I have to solve this
I will take LCM, I will show you the numericals, find the ABC, and then we will solve it. Question type fifth. फिफ्थ क्या कहता है ये देख लेते हैं. Suppose px square plus qx plus r comes. Now divided by, there is term x minus a, and instead of that we are getting x square plus bx plus c. Here there are two factors, one is linear, another is quadratic, and this cannot be factorized. The question is that if in the previous case all you are getting the factor different, here there are different factors, but if you are not able to get factors here, if it cannot be factorized, then what to do? This is a linear term. If it cannot be factorized, in such case there is one method. हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए वो सब कर रखा है. तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे कि पहला तो लीनियर है, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a अपॉन लीनियर, देयर इज नो इशू. बट कैपिटल B अपॉन व्हाट आई हैव टू राइट इट, दिस इज द क्वाड्रेटिक, बट दिस इज नॉट द लीनियर टर्म. So I will not able to write the constant here. Instead of writing the constant, what I have to write is a linear term, because this is a quadratic. So bx up plus c, and I will write the second factor which cannot be factorized as it is. Okay, so this is the method. Now we'll ask the question, sir, so far we have discussed, again this is what, degree is 3, here degree is 2. This is again case of proper. Now if the question comes that, sir, if it is improper fraction, then what to do? For example, x cube plus x square plus x plus 1 divided by x plus 1. For such case here degree is 3, degree is 2. This is improper. For improper fraction we have to divide the numerator with the denominator. If you divide the numerator with denominator, then you can easily write that what is the quotient plus remainder divided by divisor. So in this form, quotient will itself another function, for example say some tx plus some rx remainder, and what is the divisor is the qx. So like that you have to write it, and then you have to integrate it. So we have discussed so far now that how to solve the proper rational fraction, how to solve the improper fraction. If it is improper, just divide it and write in the form of quotient plus remainder by divisor. Now it is time to see some numericals to apply these formulas. So there are 6 forms that I have discussed here. Now do some numericals. Example. So example 1, I am taking it here. First example, very simple, I am taking it. Integrate dx upon x plus 1 and x plus 2. Whatever method you have learned so far, you can apply. For example, integration of x to the power n is equal to x to the power n plus 1 divided by, that is applicable, that you have already learned in the previous classes. If you haven't watched the videos yet, that link is given in the description or also in the I button, the playlist. Now what is that? What is the integrand here? The integrand here is 1 upon x plus 1 x plus 2. Now I have told you this is the, what is the here case? Degree is here 0. What is the degree here? Degree is 2. So again it is case of proper fraction. So if it is a proper rational fraction, I will write a upon, again it is linear, separate, a upon पहला factor plus b upon दूसरा factor. Now you have to equate this. You have to take the LCM, x plus 1 x plus 2. A x plus 2 plus b x plus 1. Now equate it.
if you write that in the numerator this is ax and here it is bx, I will write a plus b into x by taking the common. Now this is 2a plus b, so I will write this is constant term 2a plus b at one place, and now in the numerator x plus 1 x plus 2 in the denominator. Now this is equal to this, so here we see that the denominators are same, this will be cancelled. Now comparing both sides, you write below this, comparing both sides, this will be equal to 1 is equal to a plus b into x plus 2a plus b. Now is there any coefficient in LHS for the x? No. So a plus b is equal to 0 and 2a plus b is equal to 1. So if you write the function here from the previous case, a plus b into x, there is no coefficient of, so a plus b will be 0. So comparing that, a plus b is equal to 0. Now what is the second? 2a plus b, this is the constant, this is the constant term, because we can write 0 into x here. There is no coefficient of x there, so a plus b will be 0, so that there is no coefficient of x here in the LHS, but in RHS a plus b will equal to 0. Now here is the constant and 2a plus b, there is constant is 1. So I will write 2a plus b is equal to 1. Now what is that? A is equal to some minus b. If I write here 2 into minus b plus b, this is equal to 1. This is minus 2b plus b is equal to 1. Minus b is equal to 1. B is equal to minus 1. So a and b are, you see, the inverse negative of each other. If one is plus, so I will write a is equal to 1, so that a plus b will be equal to 0, and 2a plus b is equal to 1. Again it is fine, no issue. So we have got the a plus b, a and b. Now I will write that we have to integrate this function dx by x plus a1 x plus 2. So this can be written as integration of a is 1 by x plus 1 minus 1 by x plus 2 into dx, because this integrand have written a upon x plus 1 plus b upon x plus 2. So we know a on b, and this is same, this function is same. Understood? If you even you take the LCM, you will get the same things here, right? Now, so what I will do, we have to take the integration individually, 1 upon x plus 1 into dx minus integration 1 upon x plus 2 into dx. So for such case, you know that 1 is 1 upon x dx is log x plus 1. I'll write it here, log x plus 1 minus log x plus 2. The coefficient of x is 1, so no issue. Log a minus log b is equal to log a by b. So I can finally write log x plus 1 divided by x plus 2. And this is the indefinite integration, you have to add the plus c. And again, of course, we are talking about the magnitude. तो log में हम ये लगा देते हैं डंडा, पता है ना, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं ये फॉर्मूला में. So now second question, एक और एग्जांपल लेते हैं. अब देखिए, अगर एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यू हैव टू डू द सफिशिएंट प्रैक्टिस हियर. एक्स स्क्वायर मैंने जो भी क्वेश्चन किया है दैट यू हैव टू डू इट विद यू ऑन योर पेन, ऑन योर रजिस्टर. ओके, यू हैव टू सॉल्व इट अगेन. सो लुक एट हियर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस dx ये है. तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, क्या हम इसका फैक्टर कर पा रहे हैं. एंड व्हाट इज दैट, हियर डिग्री इज सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर है, एक्स स्क्वायर माइनस. तो यहाँ पर ये केस कैसा है, इम्प्रॉपर फंक्शन या प्रॉपर फंक्शन. दिस इज अगेन इट केस ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शन. दिस इज अ केस ऑफ, चेक करेंगे इम्प्रॉपर और प्रॉपर है. यार डिग्री 2, यहाँ भी डिग्री 2, तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा. चाहे इक्वल हो
जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का हम देखते हैं, अगर वो इक्वल है डिनोमिनेटर के, मैं डिग्री की बात कर रहा हूं, डिग्री डिग्री इक्वल है तो उस केस में इम्प्रॉपर होता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया। और अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू केस में जो है न्यूमरेटर की डिग्री दोनों ही इम्प्रॉपर जो है रैशनल फंक्शन होता है। ऐसे केस में हमें डिवाइड करना होता है। सो वी हैव टू डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इससे हमें डिवाइड कर देना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर से पहले 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये हो जाएगा माइनस करिए, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 5x माइनस ये माइनस 6 है और ये प्लस 1 है, तो क्या मिलेगा हमें, -5 मिलेगा। नाउ वी कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर बिकॉज यहाँ पर डिग्री 2 है, तो यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ मेरा डिवाइजर ये है, कोसेंट 1 है, रिमाइंडर ये है, तो हम इसको लिखेंगे, ये जो हमारा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको मैंने क्या कहा था, जो भी कोसेंट आएगा जो कि 1 है और रिमाइंडर हमारा 5x माइनस 5 है, डिवाइडेड बाय जो हम जिससे डिवाइड किए थे वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। सो इंटीग्रेशन तो हमें इस पे चढ़ाना था, इंटीग्रेशन तो हमें इसका करना था ना, तो अब हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे, इस पूरे टर्म का इंटू dx। अब हमें इंटीग्रेशन, ये दो टर्म है तो अलग अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका dx प्लस इंटीग्रेशन फाइव एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू dx। तो देखो ये dx का तो x हो जाएगा, अब हमें इसका करना पड़ेगा, और इस केस में ये कौन सा है, लीनियर टर्म है या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब नाउ ये प्रॉपर हो गया है, तो प्रॉपर वाले केस में हम इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है कि नहीं, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, a अपॉन फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। तो जरा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर क्या आता है, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको I1 मान लो, तो I1 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा होगा 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसी को करना है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, इस पूरे इंटीग्रेंट को, ये छोड़ दो, तो इसको लिखोगे a अपॉन, इसका फैक्टर क्या होगा, उससे पहले एक बार और दिखा देता हूं इसका फैक्टर। मतलब अगर इंटीग्रेशन अगर रहने भी देता तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा x माइनस 2 क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टर x माइनस 2 और x माइनस 3 हो जाएगा। तो अब हम इस इंटीग्रेंट को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू dx। अब हमें इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना होगा अगले पेज पे, यानी 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 को लिखा है हमने a अपॉन, अब यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे में x माइनस 2 और x माइनस 3, यही होगा इसका एलसीएम यहां से, और अब ये x माइनस 3 यहां से x माइनस 2 हो जाएगा, तो x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। नाउ यू हैव टू राइट इट। देखो जब हम इसको राइट करेंगे तो क्या होगा, x का कोफिशिएंट एक जगह लिखना, तो a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में बचेगा -3a और फिर -2b डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, अब हमें इसको और इसको इक्वल करना है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी के जगह x का कोफिशिएंट 5 है, तो a प्लस बी हमारा 5 हो जाएगा, और यहां से -3a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या होगा, -5 होगा। सो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा,
अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा और ये फिर हो जाएगा माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में 10। b अगर हम यहां रख देंगे तो a की वैल्यू हमारा -5 हो जाएगा। सो दिस वे वी हैव गॉट a -5 एंड b इज इक्वल टू 10। तो जब हमें a और b मिल गया तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो -5 प्लस 10। तो मतलब ये जो हमारा टर्म था 5x - 5 डिवाइडेड बाय x - 2 x - 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं a अपॉन x - 2 था तो -5 अपॉन x - 2 प्लस b 10 अपॉन x - 3। तो ये वाला हमारा टर्म हो जाएगा। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो जाएगा -5 इंटू लॉग x - 2 और ये हो जाएगा 10 इंटू लॉग x - 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 5 है और 10 है और जो हमारा ये i1 बस इतना सिंप्लीफाई हो गया। और इसके बाद हमारा i1 यहां पर क्या था x था, ये dx का x था। तो x प्लस जो फाइनल आंसर हमारा होगा x प्लस ये फिर से ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा x - 5 लॉग x - 2 प्लस लॉग x - 3। तो जो फाइनल आंसर होगा i का वो हो जाएगा x माइनस ये दूसरा टर्म -5 लॉग x - 2 एंड देन प्लस लॉग x - 3 प्लस लॉग x - 3, ठीक है, प्लस c। दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको हम ऐसे ही छोड़ दें, अलग प्लस माइनस वगैरह मत करें। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन करके के साथ आपको मिलते हैं अगली क्लास में और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 कराएंगे। ओके, सो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट हो तो कुछ भी लिखिए। व्हाट्सएप नंबर भी दिया है 9910196048, उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास लीजिए और ऑनलाइन क्लास लीजिए, घर बैठे पढ़िए। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस।